So electric potential. So potential means the ability of doing any work. So हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, कुछ काम करने की एबिलिटी पोटेंशियल होते हैं. अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं. तो इस काम को करने की आपके अंदर एबिलिटी है तो हम क्या बोल सकते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है. सो पोटेंशियल इज द ability of doing any work. So this is the potential. So today we discuss electric potential. So we know that the electric line integral, that is line integral of electric field is independent of path. Is independent of path. Okay. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो लाइन इंटीग्रल है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता. इट इज क्लोज इंटीग्रल ई बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू 0 होता है. और कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होता है वो क्या होता है, 0 होता है. इट्स 0. दैट इज डेल बार क्रॉस ई बार इज इक्वल टू 0. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल होता है वो क्या होता है, 0 होता है. और वी नो दैट द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट वो भी क्या होता है, 0 होता है. कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इट इज 0. सो दिस इज डेल बार क्रॉस माइनस डेल बार v. So this is the curl of gradient is 0. So this is our equation number 2. From these two equations, so curl of electric field is 0. So curl of the gradient is 0. So we can write it as E bar is equal to minus del V. Del bar V. So we can write it as E bar is equal to minus del bar V. So this is one equation. Or also we can write it as in the vector form, that is E r cap is equal to minus del bar V r cap. So this r cap is the unit vector, that is r cap is x I cap plus y j cap plus z k cap. This is the unit vector r cap. So we can write it as E r cap is equal to, this is the del, divergence of V or del operator, or we can call it as Nebula operator. So we can write it as minus dou V by dou R. Okay, with respect to, so R is, R के अंदर क्या आता है, X भी आता है, Y भी आता है और Z भी आता है. So we can write it as dou V by dou R, R cap. Again we can write it as E R is equal to minus dou V by dou R. ऐसे हमें उसे लिख सकते हैं ना उसे. सो दिस आर कैप को हम कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज बोथ ही साइड को आर कैप है, तो हम इसको निकाल सकते हैं और इजीली हम क्या लिख सकते हैं, ई आर इज इक्वल टू माइनस डो वी बाय डो आर. सो अगेन वी कैन राइट इट एज, यहाँ पे लिखते हैं, इट इज ई आर इज इक्वल टू माइनस डो वी बाय डो आर. Here we have to find the potential, so we can write it as dou V is equal to minus E R into dou R. Okay, तो हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज dou V minus outside this integration E R dou R. So यहाँ पर जो इंटीग्रेशन ऑफ डो वी है वो क्या होता है, V, दैट इज अवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
is equal to minus इंटीग्रेशन एंड द लिमिट फॉर दैट इंटीग्रेशन. अगर कोई चार्ज है सपोज यहाँ, सपोज कंसिडर करते हैं हमारे पास एक चार्ज है इस पॉइंट पे जो चार्ज Q है. तो यहाँ पे चार्ज है तो इसके सराउंडिंग को इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा इस तरह. ओके, इसके सराउंडिंग को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ओके इसके सराउंडिंग को ऐसे. तो जो अनदर चार्ज है उसे हमें इंफिनिटी से हमने उसे उठाया. ओके, जो चार्ज सपोज यहाँ पे इंफिनिटी है और यहाँ से उस चार्ज को हमने उठाया और हमें यहाँ तक उसे लाना है इस पॉइंट पे. और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है. तो ये यहाँ ऑलरेडी एक चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ ऑलरेडी एक चार्ज प्रेजेंट है. इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. और जब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस चार्ज को अंदर नहीं आने देता, बिकॉज वो उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अगेंस्ट वर्क करता है. तो यहाँ पे वो अगेंस्ट वर्क करने लगेगा. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो स्ट्रेंथ है उसे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे भी ज्यादा बढ़ानी होगी. तो हमें जब अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो हमें कोई वर्क करना पड़ता है. तो जो हम इसके लिए कोई वर्क करते हैं ताकि जो चार्ज है इंफिनिटी पे पड़ा है और उस इंफिनिटी पे जो चार्ज पड़ा है उसे यहाँ तक लाने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा उसे क्या हम बोलते हैं, वही हमारा क्या होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो सिंपली वी कैन कॉल इट एज, जब कोई चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज हमें इंफिनिटी से लाना होता है किसी उसके रीजन में, तब हमें जो वर्क करना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. तो यहाँ पे तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट, जहां सपोज इन सिंपल वी कैन कॉल इट एज, जहां से आपने उस चार्ज को पिकअप किया वो हुआ उसका रेफरेंस पॉइंट. दैट इज रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्या होता है, उसका इंफिनिटी होता है. सो हमने उसके इंफिनिटी से उठाया और हमने उसे इंफिनिटी से पिकअप किया इंफिनिटी टू, और हमने कहा उसे ड्रॉप किया तो हमने यहाँ उसे ड्रॉप किया. तो इस पॉइंट पे हमने उसे ड्रॉप किया. सपोज दिस पॉइंट इज r, सो द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन इज रेफरेंस टू दैट पॉइंट e by dr. So this is the electric potential. So electric potential, so this is VR. So electric potential is equal to minus integral of from infinity to r e bar dot dr bar. So this is our electric potential. So we can call it as electric potential is the amount of work done required to bring a charge from reference point to that point. Okay, जहां पर उसे ड्रॉप करना है. So in simply we can call it as electric potential is, जहां से आपने उस जो चार्ज है उस चार्ज को पिकअप किया और जहां पर आपने उस चार्ज को ड्रॉप किया, तो उसे उस पिकअप पॉइंट से यानी कि इंफिनिटी से जो पॉइंट होता है उस पॉइंट तक लाने के लिए जो आपको वर्क करना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो यहाँ से आपने जो इंफिनिटी से उसे पिकअप किया और आर तक उसे ड्रॉप किया, तो इसके बीच उसे जो इसको इंफिनिटी से यहाँ तक लाने में आपको जो वर्क करना पड़ेगा उसे क्या हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सपोज आपके पास एक चार्ज है, दैट इज इस पॉइंट पे आपके पास एक चार्ज है. सपोज दिस इज अवर एट दिस पॉइंट दिस इज अवर चार्ज Q, और यहाँ पे जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट होगी और इसके प्रेजेंस में हमें एक और चार्ज यहाँ पे लाना है. तो सपोज एट दिस पोजीशन वी हैव टू ड्रॉप एनी चार्ज. सो उस चार्ज को हमें इंफिनिटी से
पिकअप करना है। सो यहाँ से इन्फिनिटी से हम एक यूनिट चार्ज इस पॉइंट में लाते हैं, ओके, यहाँ पे। और इस पॉइंट और जो चार्ज है, इस दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, आर। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है आर है, ओके। इन्फिनिटी से हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ड्रॉप किया, ओके। तो यहाँ पे हमारे एक और चार्ज हो गया, और हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, ई बार इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन these two charges, that is electric field is E bar is equal to KQ by R square. So we know that what is the potential, V is equal to minus integral, हमने उस चार्ज को कहाँ से पिकअप किया, इन्फिनिटी से, कहाँ ड्रॉप किया, एट डिस्टेंस R. So this is the limit of this from E bar here. So this is minus infinity to R. What is this? It is electric field is KQ by R square dr. So this is constant. So we'll take it outside. KQ integration from infinity to R 1 by R square dr. So that is minus KQ, and the integration of this is minus 1 by R. So the limit of this is infinity to R. It is V is equal to, so V is equal to minus KQ, and when we put this lower limit infinity, that is 1 by infinity is 0 हो जाएगा. तो for our convenience we only put upper limit, okay. जब हम इस lower limit को put करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो हम इसको upper limit put करते हैं. और अपर लिमिट क्या है हमारे आर. सो इस आर की जगह हमने आर पुट किया, वो ये हो जाएगा, दैट इज माइनस 1 बाय आर. सो दिस माइनस माइनस बिकम्स प्लस, दैट इज के क्यू बाय आर. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके. तो हमें यहाँ पर जो इन्फिनिटी पे चार्ज पड़ा है उसे इस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और यहाँ पे कितना है, के क्यू बाय आर, दैट इज द चार्ज, द के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस, दैट इज V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर. दिस इज अवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. Circular ring. So in case of circular ring, we have to find the electric potential. So we have a circular ring. This is our circular ring of charge Q, and the radius of this ring is R, and we have to find the electric potential at this point due to this circular ring. So the distance from this point from the ring is small r. So we have to find the electric potential. So इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट चार्ज को यहाँ तक लाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता. तो इन केस ऑफ सर्कुलर रिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, दैट इज E bar is equal to K Q R upon R square plus R square raised to 3 by 2. This is our electric field in case of circular ring. So what is the electric potential? V is equal to minus integration infinity to that point. This point is R, okay. E bar dot dr bar. So minus infinity to R. What is the electric field in case of the circular ring? That is K Q R upon R square plus R square raised to 3 by 2 dr. So here that is KQ is constant, so we will take it outside, minus KQ. So this is minus KQ infinity to R. It is R upon
r square plus r square raised to 3 by 2 dr. So what is the integration of this? Is the v. So what is the integration of this? This is the integration of this term r upon r square plus r square raised to 3 by 2 is minus 1 upon under root r square plus r square, and the limit of this is infinity to r. Okay, this is the integration of that term, and when we put this lower limit, that is infinity, this becomes infinite, and 1 by infinite is 0. So in our convenience we can put only this upper limit, so we can put this only, that is v is equal to minus k cube, that is minus 1 upon under root r square plus r square. So here this is minus, so this minus become, we write here, that is v is equal to k cube by r square plus r square. So this is the work done in case of, or potential or electric potential in case of circular ring, that is v is equal to k cube upon under root r square plus r square. So इस पॉइंट चार्ज को यहाँ तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो k क्यूब बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो यहाँ पे जो k है जो कांस्टेंट है, दिस इज q is the charge on the circular ring and the r is the distance between them, and this r is the radius of this circular ring. So this depends on this distance between two charges, the radius of the circular ring and the charge on the ring. So this is the electric potential in case of circular ring. So we have to find the electric potential in case of circular disc. तो हमारे पास एक circular disc है. This is our circular disc of charge q. The charge of that disc is q and the radius of this disc is r. So we have to find the potential at this point and the distance of that point from this disc is r. So in case of circular disc, the electric field is E bar is equal to sigma by 2 epsilon naught 1 minus r upon under root r square plus r square. Okay, this is the electric field in case of circular disc. So we know that the potential V is equal to minus infinity to r E bar dot dr bar. So what is E bar here? Minus infinity to r sigma by 2 epsilon naught 1 minus r upon under root r square plus r square dr. So here what is the constant? Sigma by 2 epsilon. So we will take it outside, minus sigma by 2 epsilon naught infinity to r. We separate this 1 dr minus infinity to r upon under root r square plus r square dr. So what is this? Minus infinity to epsilon naught, integration of this is r infinity to r. So minus the integration of this, that is when integration of f dash of x upon f of x is equal to 2 into root f of x. So similarly here, what is this? It is, so 1 by 2 into root this r square plus r square. So and the limit of this infinity to r. So according to this formula, so this 2 get cancelled, that is sigma by 2 epsilon naught, it is r infinity. So we will put this limit. So what is this? Infinity. So only in this case we put this upper limit, that is r
So this is R, okay, minus this minus outside this minus. So this minus we will give to this, that is this is plus, and when we put this upper limit, that is R square plus R square. So what is this? That is V is equal to, this is sigma by twice epsilon, it's constant or common term, that is this is minus R. So minus R will take, that is minus R plus under root R square plus R square. So V is equal to sigma by 2 epsilon naught. We can write it as R square plus R square minus R. So this is the potential or electric potential in case of circular disc, that is V is equal to sigma by 2 epsilon naught under root R square plus R square minus R. Okay. This is sigma is surface charge density. This epsilon naught is the permittivity, that is R is the distance between these two charges, that is disc and this charge, and this R is the radius of this disc. Okay. So this is the potential is depend on these things, not on the path. Okay. So in case of hollow sphere, we have to find the electric field. So this is our hollow sphere. So in case of hollow sphere, we have to find the electric field outside the hollow sphere. This is the point A. On the surface of hollow sphere, suppose at this point, this is point P, and inside the hollow sphere, suppose this point, so this point is C. So in case of hollow sphere, we have to point the electric potential at the outside, on the surface and inside. So here we know that the electric field intensity or electric field intensity, that is outside the hollow sphere, is KQ by R square. On the surface, suppose the radius of this hollow sphere is R. So on the surface is KQ by R square, and the electric field inside the hollow sphere is 0. So electric field inside is 0 on the surface, and this is outside. So we know that the potential, what is the potential? V is equal to minus infinity to R, that is E bar dot dr bar. So first we find for the outside, electric potential outside the hollow sphere. So this is our hollow sphere, and from infinity, suppose this is our infinity, and from infinity to this point. Okay, तो हमें यहाँ पे चार्ज लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा यहाँ तक. Okay, तो इसका जो होलो स्फीयर है उससे जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है. Okay, तो यहाँ से चार्ज यहाँ तक लाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. सो माइनस इंफिनिटी टू this point is R, so up to R, electric field is KQ by R square dr. So V is equal to, this KQ is constant, so we'll take outside KQ, integration infinity to R, 1 by R square dr. And the integration of this 1 by R square is minus this KQ, it is minus 1 by R. So, and the limit of this is infinity to R. So, in this case, we put only the upper limit, that is V is equal to minus KQ into minus 1 by R. So, this is V is equal to, we can write it as, that is V is equal to, this minus minus become plus, that is KQ by. So this is the
electric potential outside the hollow sphere, that is kq by r. On the surface of the, suppose on the surface this r, that is this r is equal to radius of the sphere, that is r. So that is v is equal to minus infinity to r e bar dr. So here this is, so for on the surface this is up to this point to this point. Okay, so infinity से आपको ऐसे चार्ज यहाँ तक लाना है on the surface of sphere. So आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसे फाइंड करना है. तो जो इंफिनिटी से कैपिटल आर, जो इसका लिमिट हो जाएगा इंफिनिटी से कैपिटल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस infinity to r for the on the surface is k q by r square dr. So this is constant, that is kq. Integration of this is minus 1 by r infinity to r. So this is minus minus plus, and when we put this upper limit, this becomes 1 by r. So this is minus minus plus, that is kq by capital R. So this is the electric potential on the surface of hollow sphere. Okay, this is on the surface, this is outside the hollow sphere. And inside the hollow sphere, that is inside the hollow sphere, the electric field is 0. So जब हम यहाँ पर राइट करते हैं, तो इस पॉइंट को यहाँ तक जो लाने में, सपोज राइट एट v इज इक्वल टू माइनस, फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, जो चार्ज है यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाएंगे. मीन्स जो r है दैट इज इंफिनिटी टू r. ओके, इंफिनिटी टू r यहाँ तक हम उसे लाएंगे. अगेन देन यहाँ लाएंगे इनसाइड द hollow sphere. So suppose this distance is small r, so that is v bar dot dr bar plus infinity, so it has a minus sign, so this is r to r v bar dot dr. So here v is equal to, so this is not v, sorry, this is e bar. So in that case, what is e? So infinity to r, e is kq by r. It is kq by r square dr. Or when inside the hollow sphere, the electric field is, so inside the hollow sphere जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, 0 होती है. तो यहाँ पे जो r दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सपोज यहाँ से यहाँ तक, ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड वो क्या होगी, 0 हो जाएगी. तो दिस होल टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. रिमेन्स ओनली दिस टर्म. सो v inside is equal to, this is minus kq, this is integration of this is minus r infinity to r. So in this case we only put the upper limit, this minus is plus, that is kq by r. So this is the electric potential inside the hollow sphere, that is inside is kq by r, outside is kq by the small r, on the surface is kq by r, and inside is again kq by r. So this is the electric potential in case of hollow sphere. So in case of solid sphere, we have to find the electric potential on the surface of inside and outside the solid sphere. So this is our solid sphere. Okay. So we have to find the electric potential outside, on the surface and inside the solid sphere.
So we have a solid sphere and the radius of that solid sphere is r. So in case of solid sphere, the electric field that is outside is k cube by r square. On the surface is k cube by capital R square, and inside is k q r by r cube. So this is the electric field outside on the surface and inside the solid sphere. So we have to find the electric potential. So first we find for outside. So V is equal to minus infinity to, suppose at this point, we have to find the electric potential. So the distance of this from this center is r. So this is infinity to r, E bar dr bar. So that is V is equal to minus infinity. What is the value of E bar? That is E is k q by r square dr. So here this k q is the constant. So we'll take it outside. Integration infinity to r 1 by r square dr. So this is minus k q. The integration of this is minus 1 by r infinity to r. So when we put this upper limit, that becomes minus k q minus 1 by r. So this minus minus positive, that is k q by r. So this is plus V is equal to k q by r. So this is the electric potential outside the solid sphere. Then on the surface of solid sphere, so we have to drop the charge, okay, on the surface of this solid sphere, and we have to find the electric potential at this point. So for that, V is equal to minus infinity to, the limit of this is the radius of this is r. So to r, and the electric field is k q by r square dr. So V is equal to minus this k q integration infinity to r minus 1 by, sorry, this is not minus, this is r. So this is the integration is minus 1 by r. So this is infinity to r. So when we put this limit, this minus minus is plus, that is k q, and this is r. So V on the surface of the solid sphere, it is potential on the surface of solid sphere is k q by r, and it is inside. So we have to find the inside. So here we have to bring the charge. Suppose this is infinity. यहाँ से हमने फर्स्ट यहाँ तक लाया r डिस्टेंस की दूरी पर, जो इसका रेडियस है वहां तक, कैपिटल R तक, इन्फिनिटी से कैपिटल R तक है. अगेन हमें इसके इनसाइड जो अंदर वाला पार्ट है, कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है. तो अगेन यहाँ से यहाँ आया, अगेन यहाँ से जो कैपिटल R है वहां से जो इसकी डिस्टेंस है वहां स्मॉल r है, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि infinity to r and again r to small r. So we know that V is equal to minus infinity to r E bar dot dr. So in case of the inside, so V is equal to minus infinity to capital R E bar dot dr bar minus r to small r E bar dot dr. Okay. So here for infinity to r, the electric field is minus this infinity to r, it is k q
by r square dr. This minus and again this r to r. So inside the solid sphere, the electric field is, what is this? KQR by R cube. That is KQR by R cube dr. Okay, so we put this limit. Okay, so V is equal to, what is this? So this is KQ minus KQ and this is minus 1 by R. So when we put this infinity to R, again this minus, what is this? KQ with respect to R है, it is KQ by capital R cube, constant है यहाँ पे, and this, the integration of this is R square, and limit of this is R to R. So R to R. So V is equal to this. So here KQ R cube by R square by 2. The limit of this R to R. So here V is equal to this minus become plus, that is KQ by R, and when we put this limit, this becomes KQ by R. This minus, okay, minus. When we put this upper limit, that is KQ R square by twice R cube, and minus plus, okay, plus this lower limit, that is KQ R square by twice R cube. So this becomes V is equal to KQ R minus. So here this R square, this is R cube. So minus this term is first we take, that is KQ, this is twice R, and this term is minus KQ R square upon twice R cube. So V is equal to, what is the common here? KQ by R, that is here 1 plus 1 by 2 minus KQ R square upon twice R cube. So here, okay, V is equal to, this is, okay, 3 by 2 KQ by R minus KQ R square by twice R cube. So this is the electric potential inside the solid sphere. That is 3 by 2 KQ by R minus KQ R square upon 2 R cube. This is the electric potential inside the hollow sphere. On the surface of the hollow sphere is, solid sphere is KQ by R, and the outside the solid sphere is KQ by small